Thank you that everybody is now here. Great. Good to see that energy level here. Good. Very nice. So we'll be learning here some of the amazing words. Yes, people started coming. Good evening. People started jumping into the forum. Thank you. Everyone is live. Good. It's a live session. Everyone is live now. Yes. I'm just sharing in multiple groups. We are going to have a very amazing training. Slowly everybody started joining the class. Yes. I'm just putting the message. Thank you. Slowly everybody started coming. Good to see. Yeah, Sutos Babu is here. So all of you, whoever joined, say hi in the chat box. Say hi. Yeah, Lakshmi Priya has joined. I'm just sharing in my internal groups. I'm inviting all the internal students to join. Just have patience, we'll start. Slowly people started coming. Just, yeah. Thank you. Ready? Abhiyan has joined. Santosh has joined. Slowly people started coming. Good to see. Yeah, everybody started joining. Slowly people started joining. Good. Good evening. Wonderful evening. Yes. Good to see you. Yeah, chalo, good. So thank you that all of you have great presence in terms of joining this training. Today I'd like to say you first. So guys, you are wishing good morning, right? Today we'll learn, guys, rather than saying good morning, what else can you say? So put in the chat box, do you have any idea? Rather than saying good morning to somebody, what else can we say? If you meet somebody in the morning, we generally say good morning. So what else can you say? Quickly put in the chat box if you have any idea. Other ways to say good morning. Let's start up a day with amazing energy. So how many ways you can wish good morning? कितने वेराइटी में आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं? Put in the chat box. Put your message in the chat box. How many ways you can say good morning? Yeah. People started putting the message. Good. Great. So if you're watching the video, just put the message in the chat box. What will you say rather than saying good morning? मतलब और क्या बोल सकते हैं good morning के सिवा? Ways to say good morning. Good. कितने वेराइटी में आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं? या वी नो गुड मॉर्निंग, ओनली वन एक्सप्रेशंस. और क्या बोल सकते हैं? rather than saying good morning, और क्या हम बोल सकते हैं? Good. So people started putting messages.
So let me share the slides and discuss few ways we can use rather than saying good morning. Other ways to say good morning. Ready? So I'm bringing the slides in front of all of you. Yes, absolutely clearly visible. Not visible. Other ways to say good morning. Yeah, it's absolutely visible, isn't it? Yeah, good. Thank you. So, generally we say good morning, have a good day, but there are multiple ways I am now showing in a screen. You can clearly, it is clearly visible. Rather than saying simply good morning, you can also use multiple ways to say good morning, right? Good morning के सिवा और क्या बोल सकते हैं? So that we are discussing. चलो, it is already mentioned. Rather than saying simply good morning, you can also say rise and shine. Wow, nice expression. Yeah, Swarna Prabha, good evening. So rise and shine. Rather than saying simply good morning, you can also say rise and shine. मतलब गुड मॉर्निंग ना बोल के आप बोल सकते हैं राइज एंड शाइन. सो जूम पे जो लोग हैं क्विकली ज्वाइन यूट्यूब लाइव. इट इज ऑलरेडी स्टार्टेड यूट्यूब लाइव सेशन. लिंक इज शेयर्ड इन योर ग्रुप गाइस. ज्वाइन गाइस. चलो, आई एम एंडिंग द जूम क्लास गाइस. नो दैट माय बैक एंड क्लासेस आर गोइंग ऑन फॉर माय रेगुलर क्लास. सो तब क्या बोलेंगे? राइज एंड शाइन. या सेकेंड एक्सप्रेशन इज देयर, टॉप ऑफ द मॉर्निंग टू यू. Good day to you. Have a great day. Hello there. How are you this morning? Oh, this fine morning. How are you this fine morning? Wishing you the best for the day ahead. Good morning, sleepyhead. Sleepyhead मतलब कोई बंदा सोता रहता है, मतलब उठने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो उसको बोलते हैं हम गुड मॉर्निंग sleepyhead. Or else we can say also Waki waki eggs and bakey. It's just a British expression. People say, मतलब generally the closed one. थोड़ा informally बोलते हैं waki waki eggs bakey. It is just an informal expression. Isn't it a beautiful day today? What a pleasant morning we are having. क्या मस्त नज़ारा है आज का. Look a leaf. Look at what the cat dragged in. मतलब ऐसे ही किसी को मजाक उड़ा के बोलना, उठाने के देख देख बिल्लीटा को टानी आने लगी. लाइक वाकी वाकी स्लीपी हेड. कोई सो रहा है तो उसको हम लोग जगाते हैं, तो ऐसे बोलते हैं हाउ इज योर मॉर्निंग गोइंग सो फार. या सिंपली यू कैन से मॉर्निंग. सो दीज आर द मल्टीपल वेज रादर देन सेइंग गुड मॉर्निंग. यू कैन यूज सच एक्सप्रेशंस टू मेक योर कन्वर्सेशन इफेक्टिव. अपना कन्वर्सेशन इफेक्टिव बनाने के लिए you can use such expressions. So I hope. So let me remove this part. Okay. So back to the chat box, all of you. Write down at least 3 ways. 3 तरीका लिखो जो आपको समझ में याद हुआ. Just write down 3 ways to say good morning to somebody. Put in the chat box. Expecting all of you. Write down 3 ways to say good morning. Just write. Right, wrong doesn't matter. या निवेदिता. Just write down 3 ways to say good morning. 3 तरीके में हम गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं. Just write. Just write down 3 ways to say good morning. I told you lot of ways यार. 3 तरीका तो लिखो यार. लिखा जस्ट 3 ways. राइट डाउन इन द चैट बॉक्स. जो लोग वीडियो बाद में देख रहे हैं, यू कैन जस्ट राइट डाउन इन अ नोट पैड या चैट बॉक्स कमेंट सेक्शन में लिखो. राइट इन द कमेंट सेक्शन. जो भी मतलब वट एवर यू रिमेंबर. सब सही होना चाहिए, नथिंग लाइक दैट. जितना याद है लिखो यार. इट्स नॉट लाइक कि सर सब सही होना चाहिए सर. सी
Writing is more important. Correct, like everything should be correct. It is not like this. बस लिखो. लिख लिया. लिख लिया सब लोगों ने. चलो अभी चलते हैं आगे. अस्मिन. चलो गुड. सो गुड नाइट. रादर देन सेइंग गुड नाइट आप और क्या बोल सकते हैं? ओडिशा कंधमाल. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. रादर देन सेइंग कि सर मतलब गुड नाइट, गुड मॉर्निंग हो गया, अभी हम सीखेंगे गुड नाइट. हाउ मेनी वेज यू कैन से गुड नाइट? हाँ हमें मालूम है सर गुड नाइट. और क्या बोल सकते हैं? प्रियव्रता. गुड. आयुषी. गुड नाइट. रादर देन सेइंग गुड नाइट और क्या बोल सकते हैं? गुड नाइट. वेरी कॉमन एक्सप्रेशंस. एंड गाइस आई यूजिंग ऑल दिस एक्सप्रेशन इन योर डे टू डे क्लास. आज हम लोग कर रहे थे व्हाट सिजलिंग. इन ऑलमोस्ट ऑल माई क्लासेस आई डिड दिस एक्सप्रेशन व्हाट सिजलिंग. मतलब in day to day life I started using it with the students so that at least you are in this circle, start learning all the words. अच्छा, गुड नाइट. रादर देन सेइंग गुड नाइट और क्या बोल सकते हैं? सुरेश बाबू. गुड नाइट व्यतीत आउ कौन कही परिवा? कितिस जॉइन या कितिस. रादर देन सेइंग गुड नाइट और क्या बोल. एटलीस्ट राइट 2 to 3 ways. जितना आता है लिखो. रादर देन सेइंग गुड नाइट और क्या बोल सकते हैं? या देयर आर लॉट ऑफ वेज. देखो आप लोग कितना लिख सकते हो. लेट्स सी. How many expressions are you guys able to write? कितना लिख सकते हो? बस हो गया इतना ही. चलो let me share my slides and tell you guys. Good night. Yeah, I'm sharing the slides now. चलो आ गया. ways to say good night. So first expression almost everybody has written nighty night. Right. Sleep tight. Good. कुछ तो सा याद है सबको. Good. So rather than saying simply sir good night, we can also say nighty night. Sweet dreams. Sleep well. Have a good sleep. Dream about me. Go to bed, you sleepyhead. Sleep tight. Time to ride the rainbow to dreamland. Night night. Rather than saying night night. Wow, good. Night night. Don't forget to say your prayers. Good night, the little love of my life. मतलब we use this expression to express the love towards our छोटे बच्चों को बोल सकते हैं या कोई husband wife या कोई girlfriend boyfriend. You can exchange this one. Lights out. See ya in the morning. I'll be right here in the morning. I'll be dreaming of you. Dream of mama, papa. Good night, my little prince या princess. Jesus loves you and so do I. Jesus की जगह हम बोलते जगन्नाथ loves you. जय प्रभु जगन्नाथ loves you and so do I. Dream of me. Good night, the love of my life. So these are the multiple ways you can say good night to somebody. Rather than simply saying sir good night, we can use such expressions. Is it clear? Ready? Okay.
चलो, write down at least 3 expressions, whatever you remember. Just write down 3 expressions, whatever you remember. 3 expression लिखिए चार्ट बॉक्स में जो आपको याद हो. Just write down 3 expressions. Slowly people are joining. Those who joined right now, guys, we are already discuss कर चुके हैं कि how many ways you can say good morning. एक बार देख लीजिए वीडियो को. जिन लोग बाद में ज्वाइन कर रहे हैं ज़रूर देख लेना वीडियो. And right now we are discussing कि how many ways you can say good night. जो लोग बाद में ज्वाइन किए, guys, just like the video, लाइक कर लो वीडियो को थोड़ा. गुड, जल्दी लिखो. एटलीस्ट 3 तरीका होना चाहिए गुड नाइट बोलने का. राइट डाउन 3 ways to say good night. Next आ गया. Complete this. I'll discuss the next part. रेडी? लिख लिया गुड नाइट का एक्सप्रेशन. चलो गुड. राइट नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट एक्सप्रेशन. रादर देन सेइंग कि गुड इवनिंग, व्हाट एल्स कैन यू से? बसंती क्राफ्ट हाउस. वाओ. रादर देन सेइंग गुड इवनिंग और क्या बोल सकते हैं? साइश्री, सरोज, सुनीता. रादर देन सेइंग गुड इवनिंग और क्या बोल सकते हो? गुड इवनिंग ना बोल के और क्या बोल सकते हैं आप लोग? आशुतोष गिमार, बेटा क्लास के बारे में आप व्हाट्सएप में चैट करना बेटा. तेरा जो क्लास टाइम होगा उस टाइम पे होगा. ओके. यहाँ पे यूट्यूब लाइव क्लास ना, तो आई डिडंट नो कौन है. बहुत सारा आशुतोष बैठे हैं. सो पुट ए मैसेज इन द चैट बॉक्स. आपका रेगुलर टाइम जो होगा उसी टाइम पे क्लास होगा. ये यूट्यूब लाइव क्लास ना, सो यहाँ पे पब्लिक क्लास. लॉट ऑफ अदर बैचमेट्स आर आल्सो जॉइन. सो हाउ मेनी वेज यू कैन से गुड इवनिंग? आप विश करते हैं ना किसी को, सामने देखते हो तो क्या बोलते हो? गुड इवनिंग. सो गुड इवनिंग को और क्या, मतलब रादर देन सेइंग गुड इवनिंग और क्या बोल सकते हैं हम लोग? What else can we say rather than saying good evening? Good evening ना बोल के और क्या बोल सकते हैं? Yeah, quickly put in the chat box. Good evening के सिवा और क्या बोल सकते हैं? Ready? Nice evening, wonderful evening, amazing evening. अच्छा, very nice expressions I am going to share right now. चलो देखते हैं guys. What are the nice expressions out there? Wow, good evening, formal and informal ways. So there are 2 ways right now I'd like to discuss to all of you. Good evening in formal way and in informal way, guys. Formally you can say, I hope you have a great evening. Wishing you a wonderful evening. Have a nice evening. See you later. Take care. Farewell. Wow, farewell भी बोल सकते हैं. Yeah. Goodbye. Until the next time. It was good to meet you. Until we met again. I'll catch up with you later. See you tomorrow. I'm off. I have to go. Take it easy.
मतलब दीज आर द फॉर्मल वेज टू से गुड इवनिंग. इनफॉर्मली कोई दोस्त है क्या बोलेंगे? इवनिंग. ड्यूसेस. ड्यूसेस मतलब, एक मिनट यार हम भी चेक कर लेते हैं. एक मिनट तो चेक कर रहा हूँ. ड्यूसेस मतलब क्या? खुद ही को चेक करना पड़ता है बंदा. क्या है यार ड्यूसेस? ड्यूसेस मीन्स गुड बाय. इट्स ए अमेरिकन स्लैंग वर्ड. अमेरिकन लैंग्वेज में गालिया होता है, इसका मतलब गुड बाय. हाँ, गुड इवनिंग में भी गुड बाय होता है. हाँ, समहाउ लाइक इफ यू इवनिंग में किससे मिलते हैं तो आप गुड बाय बोलना चाहते हैं, रादर देन गुड सेइंग गुड बाय यू कैन आल्सो से गुड इवनिंग. या ड्यूशेस. एंजॉय द इवनिंग टू द फुलेस्ट. हैव एन अमेजिंग इवनिंग. सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ गुड वाइब्स टुनाइट. जस्ट वांटेड टू से गुड इवनिंग. कैच यू लेटर. I'm out. Peace and peace out. Later. Be good at it. Bye. Catch you later. Alligator. After a while, crocodile. crocodile मतलब क्या होता है? मतलब अभी इवनिंग हो गया. इवनिंग मतलब मत सोचे कि इवनिंग, आप किसी को रात 9 बजे भी मिलते हैं तो हम गुड इवनिंग बोलते हैं. गुड इवनिंग मतलब डोंट फील कि सर रात सन्ध्या 6टा ହିଁ 5ଟାରେ ଆମେ ଯାହା ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା କରିବୁ गुड इवनिंग କହିବୁ. We can also say good evening at 9 PM. अभी मेरे पास आप लोग मिले, क्या विश करोगे? गुड इवनिंग. राइट. अभी कितना घड़ी में बता रहा हूँ? 9:50, 9:50 हुआ. फिर भी आप लोग क्या विश कर रहे हो मुझे? गुड इवनिंग. राइट. सो गुड इवनिंग इज नॉट लाइक कि सर बस रात शाम को ही मिलेंगे. तो रात को मिलते हो तो ऑब्वियसली गुड इवनिंग बोलते हो. तो सिमिलरली वहाँ पे बोल सकते हो कि आफ्टर ए वाइल क्रोकोडाइल, मतलब और कुछ देर के बाद में आप सोने के लिए जाओगे तो क्रोकोडाइल होता है ना, सुन लेते हैं. So after a while, crocodile, have fun. So these are the words. Rather than saying कि sir good evening, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं. So write down at least 3 ways you learned rather than saying good evening. जल्दी चैट बॉक्स में लिखो. 3 तरीका गुड इवनिंग ना बोल के और क्या बोल सकते हैं. 3 तरीका. Just write 3 ways rather than saying good evening और क्या बोल सकते हैं. Put in the chat box guys. Rather than writing good evening और क्या बोल सकते हैं. 3 तरीका. 3 ways to say good evening. Quickly down in guys. Sorna Prabha. जल्दी लिखो क्विकली. Whatever comes to mind. Last 1 minute. We'll wind up the session. Rather than saying good evening आप और क्या बोल सकते हैं. सुनीता. Okay, so thank you. Few ways you guys write down written. चलो very nice. चलो thanks a lot. मिलते हैं guys फिर से कल as per your regular timing. We'll see each other and we'll have a nice time. So bye bye. चलो all the best. See you. Good night. Nighty night. Sleep tight.